Welcome to the field of pediatrics. You have newly joined a branch of medicine which serves pediatric population. Pediatric population constitutes around 20% of total Indian population. In democracy, everybody has got a vote and say except children. Children are not considered in democracy. They are left at the mercy of parents. ऊपर वाले ने जैसे पेरेंट्स दिए वैसे रहो, अच्छे दिए अच्छे रहो, बुरे दिए बुरे रहो. They are left at the mercy of families. They are left at the mercy of community. Their education is with teachers and schools. लेकिन आर.के. नारायणन बनाने का कोचिंग क्लास नहीं रहता. पुल देशपांडे बनाने का कोचिंग क्लास नहीं रहता. बहिणाबाई बनाने को कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं. बच्चा समाज में सीखता है. बट द नेचर हैज क्रिएटेड पेडियाट्रिशियंस एज चाइल्ड एडवोकेट्स. We think about their interest. We do whatever we do in our life should be in the interest of children. पहले राष्ट्र, बाद में राज्य, बाद में कम्युनिटी, बाद में फैमिली, बाद में सेल्फ. ऐसा लोगों का जीवन रहता है प्रायोरिटीज का. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज. आवर प्रायोरिटीज एज पेडियाट्रिशियन इज चिल्ड्रेन्स इंटरेस्ट फर्स्ट. Child's life is influenced by innumerable factors. One third are genetic, one third are familial, one third are environmental. That's how child's life, and remaining 10% is chance matter. The environmental factors are modifiable. We pediatricians are in the environmental factors. Schools and teachers are in the environmental factors. Friends
are in the environmental factor. So, we are entering the field of pediatrics, that is science of childhood, not treating sick children only. We have to understand the science of childhood. Science means what? Physics, chemistry and mathematics is science. So we are here to learn physics, chemistry of mathematics of every aspect of childhood. Be it growth, be it nutrition, be it development, be it education, be it welfare. Life of orphans, life of juvenile delinquents, adoption, disabled children, life of these children comes in the era of welfare. The science of welfare, the science of diseases, anatomy, physiology, pathology, pharmacology, the science of anatomy, physiology, pathology, pharmacology means physics, chemistry and mathematics of anatomy, physiology, pathology, pharmacology. उसमें फिजिक्स क्या है, उसमें केमिस्ट्री क्या है, उसमें मैथमेटिक्स क्या है, ये सीख लेना है. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है तो वो मैथमेटिक्स चाहिए. स्टैटिस्टिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स का पार्ट आता है. विदाउट दैट यू कैन नॉट फंक्शन एज अ साइंटिफिक पर्सन, साइंटिस्ट. एंड साइंस इज एवर चेंजिंग. न्यूअर concepts, the modalities have changing. So we have to be aware of the changes in the science. So this is enough about introducing you as a person who knows the science of childhood rather than a person who treats cough, cold, fever and diarrhea and loose motion and unconscious patient and convulsions. That is part of our duty. But our spectrum is so wider. Most important is growth. Child is 3 kilo at birth. Average Indian child is 2 kilo at birth. But it is 3 kilo is the standard. But our observation is average Indian child is 2 kilo at birth. Statistically. First 6 months child doubles birth weight, mathematics. First birthday child triples birth weight, mathematics. If a child lives 100 years, first year is the only year where child triples birth weight. Such a fast growth velocity never occurs
in whole life again. पहिल्या वर्षी केला त्याला 9 किलो वजनदार, म्हणून मोठेपणी तो झाला रुबाबदार फौजदार. पहले साल में उसको 9 किलो किया, इसलिए बड़ा होने के बाद रुबाबदार फौजदार हो गया. पहले साल में अगर वो 7 किलो 8 किलो रहा तो इस जिंदगी में वो फौजदार नहीं बनेगा. So growth is important. After that, every year child grows 2 kilo. Pre-adolescent growth spurt is there, 8 to 10 years. So first growth phase ends at first year. Growth phase is the bus of growth. It comes on the day of birth, waits for first year. We have to go and sit into that birth. Then growth, it takes us ahead. If mother, family, pediatricians make mistake or neglect the growth for any reason, lack of awareness, lack of time, whatever may be the reason, first growth phase is missed. So whole life child remains small. We Indians are 5-feeters. Why developed countries are 6 to 7-feeters? Because their birth weight is good, because their first birthday weight is good, because their health awareness is good. चांद पे जाने से हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री नहीं होने वाले. फर्स्ट बर्थडे को 9 किलो बनाएंगे सबको तो हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे. मेरी तो डेवलप कंट्री की डेफिनेशन ये है. फर्स्ट बर्थडे को 9 किलो बच्चे को बनाओ, तुम्हारा कंट्री डेवलप हो गया. अनलेस द कंट्री इज डेवलप, फर्स्ट बर्थडे को 9 किलो नहीं होता है. टिल द टाइम आवर चिल्ड्रेन आर 7 किलो एंड 8 किलो बाय फर्स्ट बर्थडे, वी आर नॉट अचीव्ड इनफ. इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी ऑन मून. Doesn't matter. We are all thrilled. Well, but I will be more thrilled if all the children become 9 kilo at first birthday. Because that is my field. That is my commitment. That is my devotion. That should be your commitment and your devotion. That's why you are in the field of pediatrics. Growth monitoring. वाढीवर लक्ष ठेवणे. First year, every month, weight should be recorded and a growth chart should be drawn, charted, graph. The growth chart should be mother held, not pediatricians computer held. Ideally, every child or every human being or every citizen should have an electronic health record. He goes to any doctor, he should record his findings and treatment on that electronic health record. कहीं भी जाए, ये मेरा हेल्थ रिकॉर्ड का कार्ड है, ई कार्ड है. ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए. कौन बनाएगा? नेक्स्ट जनरेशन. ये जो इंटरडिसिप्लिनरी लोग हैं ये बना सकते हैं. यानी जिसको पीडियाट्रिक्स भी समझता है और जिसको कंप्यूटर भी समझता है, ऐसे कॉम्बिनेशन स्टडी वाले लोग ये कर सकते हैं. इसको प्रोग्रामिंग भी आता है और उसको पीडियाट्रिक्स भी आता है, वो बना सकता है. तो ग्रोथ मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Our social problem today regarding growth is lack of growth awareness. बीमार हुआ तो डॉक्टर, या तो वैक्सीन के लिए डॉक्टर। वैक्सीन तो गवर्नमेंट में फ्री मिलता है, और बीमार पड़ा ही नहीं तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? ये एक गलत धारणा समाज में है। That is a misconception that doctors are there to cure illnesses. No. Doctors know about health. Doctors are there to guide you to remain healthy, prevent diseases. They are for guidance. Very few people come to doctor for guidance. People come for treatment and a list of drugs and interventions. That comes after. That is essential, part of our duty. But ill-informed society and well-informed doctor, there is a gap, and we have to fill this gap. Facilitator. We have to inform people what is right for their child. We have to inform what mistakes can occur at what age. For example, गरज नसताना वरचे चालू केल्यास बाळ बिघडते. Unnecessary top feeding spoils the child. But that has to be told on day 1 or before, during antenatal period. 6 rules of good nutrition. First 6 months, exclusive breastfeeding. Kanji at 6 months, which should be semi-solid, not liquid, not solid. चम्मच टेढ़ा करने के बाद बह गया, it is liquid. पातळ अन्न पातळ बाळ, घट्ट अन्न घट्ट बाळ. Semi-solid, weaning is by semi-solid, never by liquid. People make mistakes over there. Kanji should have a grain and a cereal and a dal. Add proteins to the kanji. Add fats to the kanji. Add vegetable to the kanji, vegetable and fruits to the kanji. Give kanji 4 times a day. Continue feeding during illness. These are 6 rules of good nutrition to be taught to mother at the age of 6 months old baby. If all these 6 rules are followed by mother, there will be no malnutrition. We hear there are malnutrition death, and crores of rupees are spent on malnutrition account. Kuposhan. Kuposhan is not only poverty, it is the bad portion. Wrong portion causes कुपोषण. खात्या पित्या घरातली मुले खुरकलेली असतात. कुपोषण सिर्फ पॉवर्टी या आदिवासी जंगल में नहीं है, हमारे घर घर में कुपोषण है. रिच क्वालिफाइड घर में कुपोषण, बिकॉज देयर डाइट इज नॉट बैलेंस्ड, बिकॉज देयर इज अ रॉन्ग डाइट. खीर चालू किया, आपने बताया वो 2 साल तक चालू रही. इन फर्स्ट ईयर any diet advice has an expiry date of 3 months. After 3 months, diet advice has to change. Diet has to change.
First 6 months, exclusive breastfeeding, kanji at 6 months, khichdi at 9 months, full family diet on first birthday. These steps, if are not followed and if are not known to mother, she has to change the diet. वो खाता है, वो मैं देता हूँ बोल के नहीं चलेगा फर्स्ट बर्थडे तक. फर्स्ट बर्थडे तक चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन मदर. मदर देती है वो उसने खाना है. ईटिंग वेल इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एपेटाइट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. Weaning by liquid food is another enemy of pediatric population. गाय का दूध, भैंस का दूध, गोट का दूध, कैमल का दूध. मिल्क इज नॉट अ गुड डाइट. हमारी परंपरा ने सिखाया है दूध पूर्णान्न है. गलत है वो. दूध पूर्णान्न नहीं है. दूध लिक्विड डाइट है. लिक्विड डाइट से वीनिंग करने से बच्चे को ग्रोथ अफेक्ट होती है. ग्लास भर पानी में, ग्लास भर दूध में ग्लास भर पानी, आधा चम्मच 1 चम्मच खवा है. गाय का बच्चा भैंस का दूध नहीं पीता, भैंस का बच्चा गोट का दूध नहीं पीता, गोट का बच्चा ऊंट का दूध नहीं पीता. ह्यूमन बच्चा सबका दूध पीता है. नॉट मेड फॉर ईच अदर. ऊपर वाले ने ऐसा बनाया नहीं है, नेचर ने. मैं साइंटिस्ट हूं तो ऊपर वाला शब्द यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो नेचर को गॉड मानता हूं. गॉड है वो नेचर में है. नेचर में है. चराचर में गॉड है. सामने वाले आदमी में भगवान का अंश है, लेकिन वो आदमी है, वो भगवान नहीं है. जो कोई महात्मा हो गए हमारे, जो कोई होंगे, नाम लो, महात्मा गांधी लो, लोकमान्य तिलक लो, सावरकर लो, सावित्रीबाई लो, महात्मा फुले लो, सब महात्मा पहले ह्यूमन बीइंग थे, है. अंबेडकर लो, वो भगवान नहीं थे. उन्हें भगवान नहीं बनाना है, उन्हें ह्यूमन बीइंग ही रखना है. ऊपर वाले ने या नेचर ने गाय का दूध बैल के दिमाग के बढ़ने के लिए बनाया है, ह्यूमन दिमाग के लिए नहीं बनाया है. अगर नेचर ने तुम्हारे बच्चे को 90% मार्क मिलाने का अकल दिया है, तो गाय का दूध देके तुम उसको पहले साल में ही 50% बना दोगे, क्योंकि बैल की बुद्धि बनी. The proteins required for brain growth of human being are different. Proteins required for brain growth of cow's child are different. So they are not made for each other, and that is wrong. These concepts, who is going to tell? Lactation failure. ऐसा कभी सुना है क्या? ये गाय को बच्चा हो गया, उसको दूध कम पड़ गया. ये भैंस को बच्चा हो गया, दूध कम बढ़ गया. ये गोट को बच्चा हो गया, दूध कम पड़ गया. नहीं, ऐसा कोई सुनते हम. लेकिन ऐसा हरदम सुनते हैं. दिन में 10-100 बार सुनते हैं, बच्चा हो गया लेकिन दूध आया ही नहीं, दूध हुआ ही नहीं, कम पड़ गया. इसका कारण ये है, वो गाय भैंस गोट बोलती नहीं मेरे को दूध कम हो गया. बहुत माएँ बोलती है मेरे को दूध कम हो गया. उसके रिश्तेदार बोलते नहीं तेरे को दूध कम हो गया, गाय भैंस के. लेकिन बहुत माओं के रिश्तेदार बोलते तेरे को दूध कम हो गया. ये रॉन्ग डायग्नोसिस है. दूध कम हुआ होगा, पेट में दर्द करता होगा, गैस पकड़ा होगा, मान अवटाळली असेल. All are doubts. Doubts are not to be considered as diagnosis.
As a pediatrician, we have to see what is the cause of excessive crying of the child. It's okay, grandmother says inadequate breast milk. But if child is passing more than 6 times urine when exclusively on breastfed and child is growing well on growth chart, we know this is not inadequate breast milk. So we have to tell this to the family. We have to explain it to them. ये साइंस ऑफ चाइल्डहुड है, ये पेडियाट्रिक्स है, ये डिवाइन है, डिवाइन है। पेडियाट्रिशियन बन के आईसीयू में, हॉस्पिटल में हम जान बचाते हैं, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस ऑफ द फैमिली करके और एजुकेशन में ख्याल देके, चाइल्ड वेलफेयर में ख्याल देके हम जिंदगियां बना सकते हैं। और ये जिंदगी बनाने का साइंस, साइंस ऑफ चाइल्डहुड, इवन साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, उसकी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, उसका मैथमेटिक्स भी है। ये हमें सीखना है और ये हमें सिखाना है। सीखना भी है, सिखाना भी है। अब मेरा जो रोल है, यू ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सो आई एम प्राइमिंग यू फॉर अ बिगर रोल एज अ पेडियाट्रिशियन इन कम्युनिटी rather than saving lives in ICUs, which is important, but this is also there. Nutrition. Nutrition in first year, nutrition in second year. At every age and stage nutrition बदलता है, क्योंकि चाइल्ड इज नॉट अ मिनिएचर एडल्ट। बच्चा बड़े आदमी की छोटी प्रतिकृति नहीं है। फीटस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग है, न्यूबॉर्न के एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग है, इन्फेंट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग है, टॉडलर के अलग है, स्कूल एज चिल्ड्रन के अलग है, प्री एडोलेसेंट, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट, मिडिल एज, ओल्ड एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, हर लाइफ के ह्यूमन बीइंग के स्टेज की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग है। ये समझना जरूरी है। ये जिसको समझेगी, पीडियाट्रिक सीखते टाइम ये एज रिलेटेड सीखना है, एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तो अच्छे पीडियाट्रिक्स काम कर सकते हैं। दूसरे साल में डाइट एंड न्यूट्रिशन में फर्क समझना चाहिए। न्यूट्रिशन इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डाइट इज दाल, चावल, रोटी, सब्जी। हमें न्यूट्रिशन नहीं सिखाना है, हमें डाइट सिखाना है। हमें न्यूट्रिशन समझना है और डाइट सिखाना है। गलती वहां पे हुई है। नर्सेस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स आर प्राइम्ड more to nutrition than diet. Applying nutritional principles in diet appropriate to the age is our duty.
गाजर में विटामिन ए ज़्यादा है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आयरन ज़्यादा है। These are the most useless statement I have heard in science of nutrition. लेकिन वरण भात भाजी भाकरी इळातून 4 बार हे आहारशास्त्राचे सार। राइस दाल रोटी सब्जी दिन में 4 बार मिलेगी बच्चे को, तो ऑल न्यूट्रिशन साइंस आ गए है उसमें। खीर देते, खिचड़ी देते, मिक्सर में से देते, मिश्रण चाहिए। बड़े लोग हम एडल्ट्स दाल चावल रोटी सब्जी चटनी मटन चिकन उसळ खाते हैं। पेट में जाने के बाद मिश्रण होता है। मिश्रण मिलने के वजह से तबीयत अच्छी रहती है। वी कॉल इट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का कंसेप्ट क्या है? As per recommendation, all nutrients are balanced to each other, to the physiological or pathological needs. बच्चों के डाइट में मिश्रण नहीं रहता। खीर देती हूं, नाचनी सत्व देती हूं, 2 साल के बच्चे को सेरेलैक देती हूं। अरे ये क्या चीज है? नाचनी से तो क्यों देती है? पौष्टिक है। अरे पौष्टिक है तो तुम खाओ ना। सब घर के एडल्ट मिलके नाचनी सत्व की पार्टी बनाओ। खुद ज्वारी की भाकरी, बैंगन का भरता, बैंगन की सब्जी और मूंगफली की चटनी, लहसुन की चटनी, कोथिंबीर की चटनी खाओगे और हमारे बच्चे को नाचनी सत्व खिलाओगे, तुम्हारा वजन बढ़ेगा, हमारे बच्चे का कम होगा। तो तुम आज से ऐसा करो, तुम घर के सब आदमी लोग, बड़े लोग नाचनी सत्व खाओ, हमारे बच्चे को दाल चावल रोटी सब्जी खिलाओ। तुमको ये अधिकार किसने दिया हमारे बच्चे को नाचनी सत्व खिलाने का? मैं ऐसा नहीं कहता नाचनी सत्व बुरा है, उसमें कैल्शियम है ज्यादा, ये सच है। लेकिन वो अगर मिश्रण किया तो काम का है, सिर्फ नाचनी सत्व काम का नहीं है। देयर शुड बी मिश्रण। दाल चावल रोटी सब्जी इंग्रेडिएंट जो अपने रहते हैं, सबका मिश्रण पेट में जाता है। डावानी वाढून घेतात, हातानी खातात ते मॅक्रोन्यूट्रियंट, भात भाकरी मॅक्रोन्यूट्रियंट। चमच्यानी वाढून घेतात, चिमटीनी खातात ते माइक्रोन्यूट्रियंट। चटनी चम्मच से लेते हैं और चिमूट से खाते हैं। ऑल चटनीज कंटेन ऑयल सीड्स। कारळ्याची चटणी, जवसाची चटणी, तिळाची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी, खोबऱ्याची चटणी, all forms of chutneys are from oil seeds and vegetables. They are raw vegetables. चटनी कभी पकाई नहीं जाती, raw vegetables. मिश्रण चाहिए और बदल चाहिए, ये समाज को बताना चाहिए। Lactation failure is not the failure of mother, it is the failure of her advisor. I will repeat this sentence. Lactation failure is not the failure of mother, but it is the failure of her advisor. So, ऐसा साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए और ग्रोथ, मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन, immunization, government vaccinations are designed as per epidemiological considerations of the nation. पहले जमाने तो बहुत बुरा हाल था,
अब तो भारत में अच्छे दिन आए हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन के क्षेत्र में अच्छे दिन जरूर आए हैं। बच्चों के हितों के लिए अच्छे दिन आए हैं, शायद पेडियाट्रिशियंस के लिए बुरे दिन भी आ गए हैं। बहुत सा हमारा काम ये गवर्नमेंट वालों ने छीन लिया है। वो मुफ्त दे रहे तो क्यों हमारे पास लोग आएंगे? अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बिजनेस, बट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ limitations of government vaccinations. When we are lauding government for fantastic vaccination coverage all over India, appreciated, but there are deficiencies. Government doesn't give a mumps vaccine. Government doesn't give typhoid vaccine. Government doesn't give hepatitis A vaccine. Government doesn't give chickenpox vaccine. ये भी जरूरी है. Government doesn't give influenza vaccine. Many places government gives nowadays rotavirus and pneumococcal vaccine. That's a good thing. But when it comes to an individual pediatrician taking care of an individual child, I have to act in the interest of the child, of the mother sitting in front of me. If she is affording, why not to give typhoid vaccine? We should recommend. But people are not aware. People think government vaccines दिया है तो सब दिया है. तो हमें बताना पड़ता है सब वैक्सीन नहीं हुए आपके, जितने जितने मुफ्त मिलते हैं उतने सब हुए. जिसको पैसा लगता है रोकड़ा वो नहीं दी तुमने. तुम्हारा गवर्नमेंट पे ज्यादा प्यार है, खुद के बच्चे पे कम प्यार है. टाइफाइड हो गया तो भी चलेगा, चिकन पॉक्स हो गया तो भी चलेगा, हेपेटाइटिस ए हो गया तो भी चलेगा, लेकिन वैक्सीन नहीं देंगे. गवर्नमेंट नहीं देता ना, हम गवर्नमेंट वाले हैं. तो गवर्नमेंट वैक्सीन में दो प्रॉब्लम है. इनएडिक्वेट वैक्सीनेशन हो जाता है, आईपी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं होता है. और दूसरा, an opportunity to interact with a pediatrician who is a knowledgeable person about science of childhood. ये जो एक्सचेंजेस रहते हैं उससे बच्चे अच्छे होते हैं. सो दैट इज इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, oral rehydration, breastfeeding, immunization, diet as per age, female education, family planning, number of children. At a time एक बच्चा पेट में, एक बच्चा गोद में और एक बच्चा उंगली को होगा, इसका मतलब बर्थ इंटरवल कम है. वो मां पे और तीनों बच्चों पे अन्याय है. वी आर चाइल्ड एडवोकेट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड of all the three children, intrauterine, on lap, toddler and preschool child. तीनों की भी हमें फिक्र है, तीनों पे भी अन्याय हो रहा है. सिर्फ एक कारण है, बर्थ इंटरवल कम है. जवळ जवळ लावलेली गाजरं खुरटलेली असतात, अंतरावर लावलेली गाजरं छान वाढतात. सो सिंपल सिमिली एंड एनालॉजी. तो बर्थ इंटरवल का भी, व्हेन आई गिव मीजल्स वैक्सीन एट 9 months, I always
Ask, are you using anything to prevent birth of next child? इतना एक क्वेश्चन पूछा तो वो हाँ बोलती है ना बोलती है, ये विषय उसके एजेंडा पे आता है. 6 months to 9 months is the ideal where again menses start, again ovulation start, and again body is prepared for the next child. So there is all likelihood of getting new pregnancy before first birthday of the previous child. So we have to make her conscious, cautious, aware of birth interval concept, which is going to be most important part in her life as a mother and all 3 children's life, 2 children's life. So, family planning, female education and communication. आज जो मैंने बताया आपको, मैंने आपको साइंस ऑफ चाइल्डहुड कम्युनिकेट किया. It was an introduction to the pediatrics, field of pediatrics. अब तुम्हारा काम है जिंदगी भर जितनी माएँ तुम्हारे सामने आएगी उनको ये बताना है. You are the emissary of spread of science of childhood. Thank you. I will stop over here.